हेलो। अकेले कोड करना बंद करो और बाकी को भी दिखाओ बिना कोई डोमेन वगैरह लिए। वो देखेंगे अब जैसे कैसे हमने करें? N10 को लोकली सेटअप किया था अपने सर्वर पे, जो कि था हमारा 5 6 7 8। अब अगर आप यही लिंक किसी को दोगे, ठीक है, कि भाई ये मैंने कुछ बनाया है, वर्कफ्लो बनाया है, उसको देखो, तो ये लिंक दोगे तो वो चलेगा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक होस्टिंग चाहिए जिसके थ्रू आप कोई भी सर्वर कोई भी लिंक किसी को भी दो और आपका वर्कफ्लो वेबसाइट सारी चीज़ें को देख पाए। तो इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक नया टूल है जिसका नाम है ngrok या ngrok। तो ये क्या करेगा कि ये आपकी वेबसाइट जो आपके N10 है जो आपने लोकल पे होस्ट की है, उसके बीच में एक पाथवे बना देगा और एक लिंक जनरेट कर देगा जिसको आप दुनिया तक पहुंचा पाओगे। ngrok इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है उसमें। क्रोम पे आओ, टाइप ngrok आओ, जो भी सबसे पहला लिंक दिखेगा वहीं पे क्लिक कर दो, साइन अप कर दो। बेसिक डिटेल्स डालनी है, ngrok का डैशबोर्ड दिख जाएगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, टर्मिनल पे कमांड चलानी है तो उसके लिए वो भी दे रखी है। ठीक, सबसे पहले आप लोग ऑथेंटिकेशन टोकन पे जाओगे। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी जनरेटेड है, मेरे को कुछ नहीं करना है। आपका यहाँ पे जनरेट टोकन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से आप जाओगे सेटअप पे, यहाँ पे पहली एक कमांड दी हुई है, इसको कॉपी कर दोगे, अपने टर्मिनल पे चला दोगे। ठीक है, टर्मिनल पे चला दो, आपका पाथ सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे वापस से हम लोग जाएंगे स्टेप्स देखने कि स्टेप्स पे क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है ngrok http 80। तो ये दूसरा होस्ट है, हमें क्या करना है, हमारा जो n8 था वो वहाँ पे हमारा होस्ट कहाँ पे होगा हमें वो देखना है, दैट इज 5678। ठीक है, फिर दोबारा से टर्मिनल पे जाना है, जो हमारे पास इन्होंने कमांड दी थी वो कॉपी करनी है। ठीक है, बस हमें क्या करना है, जो इन्होंने पोर्ट दे रखा है वो चेंज करना पड़ेगा। पेस्ट दिस कमांड। ठीक, उसके बाद जो हमारा पोर्ट था वो था 5678। जस्ट हिट एंटर एंड यू आर सेट। तो उसके बाद देखो, अब हमारा पहले तो जो होस्ट था वो था 5678, यहाँ पे हमने ये डाला हुआ था। अब अगर आप इस लिंक को भी ट्राई करोगे और किसी को भेजोगे तो आप देखोगे कि ये लिंक भी चल रहा है। ठीक है, टेस्ट कर देते हैं फटाक से। ये देखो, यू रिडायरेक्ट इट। बस कुछ नहीं, अब ये आपको किसी को भी वर्कफ्लो दिखाना है, ये लिंक भेजो और अपना काम दिखाओ, सेम फॉर द वेबसाइट। आगे हम देखेंगे कि इंटरनेट बेसिकली कैसे काम कर रहा है, इसके बिहाइंड वो है क्या। तो यार, जो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी ना कि हम कैसे अप्लाई करेंगे इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल, उसके लिए मैंने एक ना एनिमेशन जनरेट की है। तो वो देखते हैं, उससे आपको थोड़ा बेटर समझ आएगा कि कैसे सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। ठीक है, विजुअली आप उसे एक बार फिर से देख पाओगे। और ये एक एक्सपेरिमेंट था, मैं देखना चाह रहा था कि हाउ एनिमेशन वर्क्स, और जो मेरा एक मॉडल है ये मेरी वीडियो को अच्छे से रीड कर पा रहा है कि नहीं। फिर आने वाली वीडियो हम ये भी देखेंगे कि आप लोग कैसे बनाओगे ये सब। ठीक है। You've built something great on your local server. It works perfectly. But right now, all of that effort is trapped inside an invisible box. If you copy your standard localhost link and send it to a client or a colleague, they'll click it and the connection will immediately fail. This animated diagram shows exactly why that happens. Your local machine is a deliberately closed network node. It operates as a fortified environment programmed to repel unverified incoming data from the outside world. To bypass this safely, we use a specialized tool called ngrok. It acts as a drill, engineering a secure, dedicated public bridge straight through that local firewall. Before initiating this process, you must have two strict prerequisites in place. Your application needs to be actively running on your local machine, and you need direct access to your system's terminal. Piercing this local firewall takes your workflow from an isolated experiment to a live, globally deployed project. Open your browser, find the ngrok platform, and click the first link to begin the sign-up sequence. Creating an account is a mandatory security measure. You must establish a verifiable identity before the system will allow you to open a network tunnel. Looking at this UI mockup of the ngrok dashboard, direct your attention to the left sidebar. Locate and click on the auth token item. The platform provides a precise setup command right on this page, which contains your unique token. Copy that exact line of code. Switch over to your local terminal and paste that command. Press enter to securely bind your hardware to the ngrok network. Your terminal will output a short confirmation message. This verifies that your specific authentication token has been successfully written to your system's local configuration path. This digital handshake upgrades your local machine from an anonymous box into a verified, authorized node on the global ngrok network. Your hardware is authorized, but you still have to explicitly define the exact data pathway from the internet down to your local application. Data hits a barrier at default port 80. Copying this placeholder blindly causes a failed connection. Identify your precise local port. For our N8N server, it's 5678. When mapped correctly, data flows smoothly. Modify the command, replacing 80 with 5678. Type the finalized command, ngrok http 5678, into your terminal and hit enter to execute the tunnel creation. Precision in this port mapping is the singular difference between a collapsed connection and a successful breach through your local firewall. This mockup shows the immediate visual transformation of your terminal. The standard prompt disappears, replaced by the live ngrok status interface. Locate the specific line labeled forwarding. The system has generated a new randomized HTTPS web address for you. Copy that full URL. Let's test this external payload. Open a completely fresh browser tab and paste your new URL into the address bar. Hit enter and watch your previously isolated local application load in real time, now accessed completely over the public internet.
You now have a secure operational link. You can transmit this URL to anyone globally, and they can interact with your live project on their own machines. Mastering this secure tunneling process shifts your role from a restricted local developer into a global host,